Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 8, Indian Budgetary System of Financial Administration. Topics to be covered are Introduction, Evaluation of Budgeting System in India, Principle or Budgeting, Financial Year, the Budgetary Process, Budgetary Cycle. So at the very beginning, the first question that basically arises in our mind is what is budget. देखिए बजट होता क्या है. बजट क्या है? एक फोरकास्ट है जो हम लोग अपने पर्टिकुलर कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपने मनी को और क्या रिवेन्यू होने वाला है उसके बारे में प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहेंगी, डेट आर बजट. सो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन बजट कैसा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इवन दो बजटिंग इज इन एसेंट एंड medieval India was known not only of in its essential but is fairly great detail. Modern budgetary practice started taking space with the government of country being taken over directly by the British Crown. देखिए इंडिया का बजट कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब हमें इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट बनी तब से हमारा इंडियन बजटरी सिस्टम स्टार्ट होता है. सो ब्रॉडली द इवैल्यूएशन ऑफ बजटिंग हैज़ पास थ्रू 3 स्टेजेस. फर्स्टली द बजट सिस्टम was a sub-system of the British administration. The financial objective was subordinate to a limited object of canonical power. Control of expenditure and accountability were the hallmarks of this period. Second, with the attainment of independence, the development priority of the nation subtended the limited object of British Raj. The third phase of planning orientation has been sought to be imparted to a budgetary exercise. These 3 phases correspond to the system known as incremental budgeting, performance budgeting and zero-based budgeting respectively. Now move to our next slide. Next slide contains evaluation of budgeting system in India. इंडिया में बेसिकली बजटिंग सिस्टम का इवेल्यूएट कहाँ हुआ? बेसिकली हम देखा जाए तो इंडिया में जो बजटिंग है वो हमारे पास लॉन्ग टाइम से ही चलती जा रही है. जो हमारे पास अर्थशास्त्र था उसमें कंप्लीट बजट के बारे में लिखा हुआ था, कंप्लीट अकाउंटेबल के बारे में मिलता है. बट एक्चुअली एक स्टार्ट कहाँ से हुई? आफ्टर जब हमें ब्रिटिश से हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमारी बजटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो कौटिल्य अर्थशास्त्र which describe the administration during Mauryan period makes reference to an excellent budget system with very detailed minute rules about the maintenance, preparation, submission and serenity of accounts. Every year the finance minister made a note on the opening balance in treasury of all current expenditure including capital project in hand as well as those which had been completed. Along with this, there was a detailed statement of receipts from all sources and also a statement of closing balance. Full and precise account were kept of all these receipts and outgoings on the revenue and capital accounts. Plans were also prepared and included in the budget of all proposed new and profitable expenditure for investment. The account included estimates for the coming year and actual result of year just ended. The entire cabinet sat in conclave, so to say, the scrutinize them and pronounce upon their accuracy, fulfillment and satisfactory nature in all respect.
देखिए बेसिकली क्या होता है, अकाउंट क्या है, एक जजमेंट होती है। जो भी हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं वो एक साथ बैठते हैं और इस जजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली पार्टिसिपेशन रहता है, वो अपना व्यू देखते हैं कि हाँ इज इट सेटिस्फैक्ट्री, फुलफिल हो पाएगा, डिटेल रूल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सो नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड कंटेन प्रिंसिपल ऑफ बस्टिंग। इंडिया में जब हमारा बस्टिंग सिस्टम बनता है तो उसके कौन कौन से बेसिकली प्रिंसिपल हैं। सो द असेंशियल प्रिंसिपल जनरली ऑब्जर्व इन गवर्नमेंट बस्टिंग इन इंडिया आर, फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ एनुअलिटी। देखिए एज वी नो हमारे यहाँ जो बजट होता है वो एनुअली आता है। सो द बजट शुड बी एनुअल बेसिस। दिस लीड्स टू अनदर रूल, द रूल ऑफ लैप्स। The operation of this rule leads to rush of expenditure towards the end of the year. However, it has the merit of enforcing parliamentary session, which is always for an amount for a specific period, after which it must be obtained again. This implies that if the flood voted are not used by the end of financial year, the unsubstantiated balance lapse. Next है हमारे पास the government budget are on cash basis. So now move to third point. There should be one budget for all financial transaction of government. So in the absence of one common budget, it would be difficult to assess the true financial position of the government. देखिए थर्ड पॉइंट हमारे पास कहता है कि जो हमारे पास जो ट्रांजेक्शन होता है ऑल फाइनेंस का, हम उसको एक ही बजट कंसीडर करके चलते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं होगा तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं लगेगा कि हमारे पास टोटल कितना पैसा है एक्सपेंड करने के लिए, एक्चुअली हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। सो रेलवेज एंड अनदर पब्लिक एंटरप्राइज हाउएवर हैव सेपरेट बजट। इन केस ऑफ रेलवेज टोटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर इनकॉर्पोरेटेड इन जनरल गवर्नमेंट बजट्स। द एस्टिमेट्स ऑफ कैपिटल एंड loan disbursement and also the extra budgetary resources for financing the plan of public expenses are also shown in central budget. Now move to our next point. Next point कहता है the budgeting should be gross and not net. So the budgeting, the gross transaction both in case of receipt and expenditure of each department would be shown. It is not permissible to deduct any receipt accruing to the department from the change of collection of any another expenditure. This is intended to ensure that the parliamentary control over expenditure is meaningful. Next point है budget should be closed. Move to next point. The form of estimate should correspond to the accounting heads, since the estimate get converted into actual account of receipt and expenditure. Now move to next slide. Financial year. So देखिए अब हमारी जो फाइनेंशियल ईयर की साइकिल होती है वो किस टाइप से होती है। सो जब हमारे पास बजट स्टार्टिंग में आया था तो हमारी जो फाइनेंशियल साइकिल रहती थी वो 1 मई टू 30 अप्रैल तक रहती थी। अब 1 मई पे हमारे पास नए बजट रूल्स आते थे जो अप्लाई किए जाते थे 30 अप्रैल तक। सो उसके बाद जब हमारे पास 1866 आया तो उसको चेंज कर दिया गया, अप्रैल से मार्च तक बना दिया गया। और उसके बाद भी इवेल्युएटली चेंज होते रहते हैं इसमें। नाउ जो हमारे पास जो ईयर में 1 टाइम बजट आता है वो भी एनुअली ही होता है।
Now move to this particular slide. When the first modern budget was presented in 1860s, the financial year adopted by the government was 1st May to 30th April. Beginning with the year 1966, however, the financial year was changed to April-March in conformity with the practice in England. This practice has been subject to debate, and various committees and commissions which examine the issue have been critical for it. The Administrative Reforms Commission, in its report on finance, accounts and audit, observed the financial year started from 1st April is not based on custom and needs of our nation. Our economy is still predominantly agriculture, and this depends upon the behavior of principal monsoon. देखिए, हम लोग बोलते हैं मानसून बजट आ गया, तो बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल तक ही चलता है, क्योंकि बेसिकली 1 अप्रैल से बेसिकली जो कस्टमाइज़ किया गया है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि स्टिल हमारी जो कंट्री है वो टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो मोर रियलिस्टिक फैक्ट को लेके चलने के लिए हमें उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड का वेट करना पड़ता है। So a realistic financial year should be enabled a correct estimates of revenue, should also synchronize with a maximum continuous spell of working session and facilitate an even spend of expenditure. Now move to our next slide. Next point contain the essentiality of budget year should be performing the following function. First one, making a fairly accurate estimate of revenue. जब भी हमारे पास बजट होता है वो फेयरली वो रिवेन्यू को एस्टिमेट करना चाहिए. सेकेंड, मेकिंग अ फेयरली एक्टिवेट ऑफ एक्सपेंडिचर. जो एस्टिमेशन होता है वो फेयरली होना चाहिए. द बजट कैलेंडर शुड बी कन्वीनियंट टू legislate and administrators. Now move to our next slide, the budgetary process. So with the attainment of independence, the objective, the policy framework and the environment of financial administration underwent a radical change. The conflict between the popular will and appreciation and the policies and the procedure which had characterized financial administration in the country disappeared overnight. Even though the basic feature of Government of India Act 1935 with regard to financial administration were retained, there was no fundamental disharmony between these instruments and national priorities. So the budgetary process in India follow the procedure laid down in the article 112 to 117 of Constitution. जो budgetary process लिखा है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 112 to 117 तक लिखा गया है. So accordingly annual budget of union is called annual financial statement of estimated receipt and expenditure. The budget shown of receipt and the payment of the government under three parts: isolated funds, contingency fund and public account. So सबसे पहला isolated funds क्या होते हैं? So isolated funds in India, all revenue received by the government, loans raised by it, and also all the receipt from recoveries of loans granted by it form a isolated fund. Second है हमारे पास contingency fund. कौन से होते हैं? Occasion may arise when government have to meet urgent unforeseen expenditure pending unauthorization from the parliament. Last हमारे पास public account. So beside the normal receipt and expenditure of government,
which relate to the consolidate fund. Certain another transaction enter government account in respect of which government act more as a banker. Now move to another slide, budgetary cycle. So in order to allow the time for executive and legislative process to go through, budgeting is geared to a cycle. The process of approval is very significant and responsible from of government. The cycle consists of four phases: preparation and submission, approval, execution and then audit. सबसे पहले जो भी हमारे पास बजट में आता है, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है, उसको पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है, देन उसका अप्रूवल मिलता है, पर फिर उसको एग्जीक्यूशन में लाया जाता है, आफ्टर दैट उसका ऑडिट होता है. सो पहला पॉइंट है बजट प्रिपरेशन. सो इन इंडिया बजट प्रिपरेशन formally begins on the receipt of circular from the Ministry of Finance sometime during September and October, that is about 6 months before the budget presentation. The circular prescribes the time schedule for spending final estimates separately from the plan and non-plan, and the guidelines to be followed in the examination of budget estimate to be prepared by the department concerned. The general rule is that the person who spend money should also prepare the budget estimates. Budget proposal normally contain the following information: account classification, budget estimate for the year, revised estimate and actual for the previous year. नेक्स्ट है हमारे पास अप्रूवल. एज बजट पेश करने के बाद वो पार्लियामेंट में अप्रूव होता है. जो मिनिस्ट्री होती है उसको ढंग से रीडअप करती है, उसके हर एक स्टेज के ऊपर बेसिकली पूरे हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स बैठ के उसको अप्रूव करते हैं. इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड देन उसको एग्जीक्यूशन के अंदर लिया जाता है. सो द एग्जीक्यूशन ऑफ बजट is responsibility of executive government. The procedure of execution of budget depend upon distribution and delegation of power to the various operating level. Next है audit. The executive spend public funds as authorized by the legislature in order to ensure accountability of the executive to the legislature. Public expenditure has to be audited by the independent agency. So similar is written here as we have already studied about this. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is, what are the function of budget year? My second question is, what are the main function involved in execution of budget? So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.